So in this way, we can implement the stack using linked list. These are the elements that we want to push on the stack. As it's a linked list, the top element is the element which is inserted in the linked list at last. So कौन सा last में insert हुआ है? That is 5. So this is the last element of the stack, and as it's a last or top element, top variable will point to that. And this is the last element. Last means sorry, इसके बाद लिंक इसे कुछ नहीं है, that's why null. Yes. अब मुझे अगर इसे implement करना है, I will explain it again. This is just short introduction. Now, when I want to implement stack using linked list, my first task obviously is to declare or to define structure of a node. Yes. So for defining the structure, what we will do, we are using linked list for representation of stack. So the structure consists of type def struct node. कौन सा? Stack node. So S node. Yes. And then linked list consists of nodes. So we have to define the things related to node. Type of data. So I will use int data and struct S node pointer next, and then this is nothing but the structure for node of the stack, and we are implementing stack using linked list. So now suppose I have some parameters or some element that I want to insert in stack. So क्या करेंगे हम? First of all, we have to create the node. So as usual, node creation के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम? New node. New node. Yes. So what we will do? We will use top equal to new node. Here S node. Yes. Because हम जो node first create करेंगे, top उसी को point करेगा. So we'll define top equals to new node. Then we will ask the data. Suppose the data I want to insert in the node is X. So I will write top of data equal to X and top of next equal to null. So इससे क्या होगा? One node will be created. उसे point कौन करेगा? Top. Yes. And its next field is null and data is X. So in this way, new node will be created. Now, suppose I want to insert or I want to push another element on the stack. So suppose the data that I want to insert is 5, 20, 79, 43. Okay. So ये जो first था, suppose वो इस no instruction से हो गया. Now I want to push remaining 3 elements on the stack. So for that purpose, what I will do, I will use S node pointer P. Yes, and I will write P equals to new S node. Yes, so new node will get created जिसे P point करेगा. Then P of data equal to 20. So
20 will be inserted here, and I will write P of next equal to top. Yes, so P of next equal to top. इससे क्या होगा? This link will get created. Yes? Yes or no? मैम जैसे एरे वाले फॉर्म में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर टॉप एंड एक एरे को डिक्लेयर किया, आई मीन वो स्ट्रक्चर में वो मेंबर्स थे। वैसे लिंक लिस्ट को अगर यूज करें तो एक और स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जिसके अंदर लिंक लिस्ट होगा एंड टॉप होगा? No. इट्स नॉट। Yesterday we have seen implementation of stack using array. Yes. So अगर मुझे stack implement करना है तो मुझे array लगने वाला है, तो stack के लिए मैं structure लिख रही थी type def struct stack, उसमें मैं array के लिए लिखूंगी और उस array को point कौन करने वाला था? top. That's why I have defined array as well as I have defined top. Yes, and here also we are implementing stack using linked list. So linked list है, normal linked list है, लिंक लिस्ट को ही हमें एज अ स्टैक यूज करना है। यस, सो लिंक लिस्ट में क्या क्या होता है? एक पॉइंटर होता है जो लिंक लिस्ट को पॉइंट करता है, जैसे हमने थर्ड यूनिट में, फोर्थ यूनिट में देखा, लिंक लिस्ट के यूनिट में देयर इज अ पॉइंटर हेड which always points to the first node. In the same way, in our case, top is the pointer which always points to the top of the stack. Means जो last insert करोगे आप उसी को point करेगा। That's why लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो नोड का स्ट्रक्चर लिखा। अब हम ये कोड देखेंगे that will insert the node in linked list. There is no difference. Yes. फिर लिंक लिस्ट एंड दिस स्टैक नोड, there is not any difference. Linked list and stack node. They're just giving it different names. No. See, stack is a data structure. One thing. Forget about this. Before stack, array is a data structure जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं in continuous memory location. So it has its own operations or its own way of executing the operations. जैसे इंसर्शन हो, डिलीशन हो, उसके खुद का एक वे है उसे इम्प्लीमेंट करने का। सेम वे लिंक लिस्ट इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर memory utilized for storing the element is not contiguous. It's a random memory is used. Yes. So for that purpose, inserting the element in the linked list or deletion has its own way of execution. दोनों के way different है. In same way, stack is also a data structure. स्टैक में अगर मुझे एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, पुश करने हैं या एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, रिमूव करने हैं, तो उसका खुद का एक वे है इम्प्लीमेंटेशन का। एक ही एंड से आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो। यस, लिंक लिस्ट में कैसा है? यू कैन डिलीट बिगिनिंग नोड, you can delete ending node, you can delete middle node also, but in stack you can insert only in one direction and you can delete from that only one direction. Yes, now stack can be implemented using array also, can be implemented using linked list also, but stack का concept change नहीं होने वाला, concept वही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे मैंने ये इंसर्ट किया, इसके बाद ये और इंसर्ट करते जाऊंगी, डिलीट करते वक्त मैं ये डिलीट कर सकती हूँ क्या? नो, आई विल डिलीट ओनली द एलिमेंट विच इज इंसर्टेड एट लास्ट, और जिसे टॉप पॉइंट कर रहा है वही एलिमेंट में डिलीट कर सकती हूँ। मीन्स लिंक लिस्ट यूज की है यहाँ पर, बट कंसेप्ट स्टैक का है। इंसर्शन एंड डिलीशन एक ही एंड से है, बट वी कैन इम्प्लीमेंट स्टैक as an array, as a linked list also. Two different way of representation of the stack. Yes, that's why यहाँ पे linked list का सिर्फ concept use हुआ है,
सो हम लिंक लिस्ट में नोड इंसर्ट एंड डिलीट करने वाले हैं. दैट्स व्हाई लिंक लिस्ट के जैसा ही ये स्ट्रक्चर है. मीन्स लिंक लिस्ट के नोड का ही ये स्ट्रक्चर है. बट जस्ट इस नोड को हाउ वी विल इंसर्ट द नोड एंड हाउ वी विल डिलीट, it is little bit different. Different means from only one end we can insert and delete. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Now, from this node is attached to this node. Yes. Now, according to the stack concept, top will always point to the last element that is pushed on the stack. So I have to remove top from here and point it here. So what I will do, I will use the instruction. क्या instruction use कर सकती हूँ मैं? Top equal to P means top now consists of the address of P. P का address means P में क्या है? P consists of the address of this node. So now top also consists of the address of this node. So now top will point here. Yes. Again, for next data, same instructions will be used. Now, by using this, P equals to new node. Now P will not point to this. P will, before this, new node will be created. And now address of that new node will be held in P. So now P, indirectly we can say that P will point here. Then we'll insert the data. Again P of next equal to top. Now this is my top. So P of next is top means this link will be created. And top equals one more node is there. So now again P equals to new node. P of data 43. P of next top. Top equals to P. So now my top is this. Okay. In this way, I have pushed items on the stack. सबसे पहले कौन सा एलिमेंट पुश किया? This one. Then this, and then this. So finally, now my top is pointing to this last node. So suppose now I want to perform deletion operation on the stack. How I can perform? I can delete this element only pointed by top. Top always points to the last element that is pushed on the stack. Yes. So I can delete this element only. I cannot delete anyone from this. Yes. So this one and this one part you got. These three instructions are for creation of first node. That's why मैंने ऐसे लिखा है कि directly I am creating the first node and I am assigning pointer top to that node. After creation of first node, you can repeat these instructions. How many times? The time, suppose there are 4 nodes. So for creating first node, use this instruction. For creating remaining 3 nodes, use these instructions and create the stack. Okay. Now, ये लिखना है आपको. Yeah, I shall move to deletion. Okay, now as this is the last and element that I can remove or pop from the stack and that is pointed by pointer top. So now अगर मुझे ये delete करना है, so what I have to do? First thing,
after deletion of this, which is my top of the stack? ये delete करने के बाद, which is my top of stack? Node below it. Node below it means this is my top of stack. So my top should point to this. Yes. So what I have to do? Point P to this node. So उसके लिए क्या करोगे? P equals to top. Yes. So P equals to top. So P will point to this. Then increment top or point top to the next node. Means I want to point top here. So I will write top equals to top of next. This is the next node of this. So I can write top equals to top of next. So top यहाँ आ गया. Yes. Means अब मैं इसे delete कर सकती हूँ. So I can write delete P. Okay. So these three instructions are sufficient. तो अब होगा क्या? This will get deleted. Yes. और अगर next node delete करना है, again P equals to top, top equals to top of next, delete P. Means point P here using this instruction, move top to the next node and delete P. So this will get deleted. Yes. Means this is actually LIFO type of structure. Last in, first out type of structure. Got deletion of the element from stack. So again, stack में कौन से operations होंगे? Initialization of the stack. Second one, check whether stack is empty. Now इसमें full operation आएगा. Can we check stack is full or not? Because now we are implementing stack using linked list. So can we say that? No. Why we cannot say that? I want to say that I cannot write function for checking whether stack is full or not. What do you think? Why I cannot write? Array had a size limit, and in linked list we can add nodes as many as we want. Major difference between array and linked list. When we are using array for any purpose, we are using contiguous memory location. So we have to first of all mention the size of the array. But when we are using linked list, there is no binding on the size because we are creating node at runtime as and when required. So if there is a requirement of the node, create the node means reserve the memory for the node and put the data. Yes. तो जब तक आपके लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, whatever, memory is there, till that time you can continuously insert the node in the linked list. Yes. So here when you are implementing stack using linked list, no full operation can be written. Only initialization of the stack, checking whether stack is empty, pushing the element on the stack and popping the element. Only 4 operations we can write. Yes. Now again, see, we'll see that operations one by one. Void initialize. Now in initialization, next is just a minute.
So I have just written name of all the functions here. Okay. Now am I audible? Yes, ma'am. Okay. So before going to the code of that function, what we have to do, first of all, see the parameters of all the functions. What is written as a parameter? Whenever I want to initialize the stack, I have written stack double pointer t. But double pointer, push double pointer, stack double pointer t, pop stack double pointer t, empty stack single pointer t. Why this? Double pointer means here I will, whenever I will call this function in my program, at that time I will pass address or parameter as an address, not a pointer. Yes? Just a minute. Yes. So these parameters will be passed as a value, pass by value, not sorry, this is passing value, this is passing address. Why address now? Whenever I am initializing the stack, initially my stack is empty. If my stack is empty, I should point that top is null. Yes? My top is nothing but the pointer pointing to the structure node. Yes? Initially, my top will be null. So top की वैल्यू है जो मैं इनिशियलाइज करने वाली हूँ एज ए नल. तो इस यहाँ पर आई एम गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ टॉप पॉइंटर. दैट्स व्हाई आई विल पास in main function, when I will call this function, I will pass address of this. जहां पे भी आपके पैरामीटर की वैल्यू चेंज होती है, अगर when you are passing that parameter by value, so it may get changed in between, but in between calling and called function. But when you are passing parameter by an address, then you are passing address of that memory location. For example, एक देती हूँ example, my variable is int x. So this is the memory, yes, where I am going to store variable x. Its address is 1001. Yes, if I am passing the value of this x, okay, and if there are some other, this variable consist of some other value, by default वो value अगर इसने consider की previously इसमें कुछ value है and I am passing some another value, yes, तो कौन सी value consider होनी चाहिए? The value that I am passing, yes. But suppose in meanwhile it is referring original previous old content of x जो भी है, suppose x is equals to 5, yes, तो वही refer होंगे. But when I am passing address of that variable जहां पर वो store है memory में, then there is no chance of changing the value. Yes, this is the difference between pass by value and pass by address. आपका OOP में हुआ होगा. So whenever I am going to change the value or parameter, whatever value of top variable, at that time I will use double pointer. Yes. Its meaning is at the time of calling I will provide address. Address कैसे provide करते हैं? Using ampersand sign. Yes, so इसका address मैं provide करूंगी. So to indicate that double pointer is used. So push में जब operation perform करूंगी, at that time also the address of my top variable is going to change. So that's why double pointer is there. When I am doing pop operation, at that time also, I am going to change the address of top. Top will point from one node to another node. Yes,
हमने किया था जब मैं ये डिलीट करूंगी top, instead of pointing this, now top will point to this. Means I am going to change the address or change the content of that top. That's why double pointer is used. So when I will call this function, I will provide address of that top. Whenever I am executing this function, int empty, I am just checking whether stack is empty or not. I am not going to change the value of top at all. That's why single pointer is there. Okay. Now, before all this, I have to indicate S node, stack node pointer T. Yes, means this is the top pointer. Yes. So now instead of top, I will write T because मैंने top को T करके point किया है. Yes. If you are using top TOP, then also okay. If you are using simple T, then it is also okay. Just you should remember what that T means. T is nothing but the top pointer pointing to the last element of the stack. Okay. So now initialize करोगे तो क्या करोगे? Initialize means pointer T equals to null. Yes. Whenever you are using double pointer, तो यहाँ पे जब भी t यूज करोगे फंक्शन के अंदर यू हैव टू मेंशन पॉइंटर t. अब तक हमने लिंक लिस्ट में ऐसे किया था क्या? लिंक लिस्ट में मैं कैसे लिखती थी? नोड पॉइंटर p. यस. और डायरेक्टली हम लिखती थी p इक्वल्स टू न्यू नोड. ऐसे लिखती थी क्या? पॉइंटर p इक्वल्स टू न्यू नोड? नो. बट हियर you are using double pointer, so you have to do that. So now initialize means initially stack is empty because t is null. T is not pointing to any node. That's why stack is empty. Now push operation. In push again s node pointer p. इसलिए because you are creating a new node, then p equals to new s node p of data equal to x because यहाँ पे मैंने डेटा सेंड किया है फंक्शन थ्रू. p of next equal to t. yes. अब t मेरा नल भी है बट व्हाट आई एम राइटिंग p of next equal to t. तो ये जो नोड मैंने क्रिएट किया p वाला, p of next is t means ये ऐसे हो जाएगा and now t is this using this instruction. ओके. पहली बार. सेकेंड टाइम जब ये इंस्ट्रक्शन कॉल होगी तो सपोज t मेरा ये था, ये मेरा p है, सो p इक्वल्स टू न्यू नोड, p ऑफ डेटा इज 20, p ऑफ नेक्स्ट इज t. सो ये लिंक क्रिएट हो जाएगी. ओके. एंड देन आपको करना क्या है? वन मोर इंस्ट्रक्शन, पॉइंटर t इक्वल्स टू p मीन्स यहाँ पे आ जाएगा. यस. देन पॉप. पॉप के लिए भी हमने देखा है कोड. क्या लिखा था हमने? इंट x s नोड पॉइंटर p, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पॉइंटर लगता है. यस. अब p is equal to pointer t means p ने इसे पॉइंट किया. ये लास्ट है तो मैं यही डिलीट करूंगी मीन्स ये पॉप करूंगी. सो p is pointed this. Then copy the element in one variable. So x equals to p of data. So ये p का डेटा जो है 25 x में कॉपी कर दिया. Then t equals to p of next और t of next, कुछ भी लिख सकते हो. सो t यहाँ पे आ जाएगा एंड देन डिलीट p. ये p डिलीट हो जाएगा. एंड लास्ट इंट है मीन्स आई हैव टू रिटर्न समथिंग. सो विल राइट रिटर्न x. जो भी एलिमेंट आप डिलीट करते हो मीन्स वेदर एनी एलिमेंट दैट यू आर रिमूविंग फ्रॉम द स्टैक, you have to return that element to the main function so that you can print that element this and this is deleted. So that's why return type is int and return x.
Last is empty. Empty कैसे check करोगे? If top is null, means if t is equal to null, return 1, else return 0. Yes? When we are representing stack by array, तो उसमें टॉप एक वेरिएबल था जो आपने स्ट्रक्चर में डिफाइन किया था. स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफाइन किया था? एरे एंड टॉप वेरिएबल. बट नाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट. सो लिंक लिस्ट में क्या है? नोड. सो जस्ट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ नोड एंड यूज टॉप as a pointer variable which will point to the last element of the stack. That's why declare in this way. Got everybody? I will give you one example how to implement all these functions in a program. Suppose I want to perform reversing of the string. मेरी स्ट्रिंग है इंडिया. कितने कैरेक्टर है उसमें? INDIA. Yes, means I want to create a linked list of 5 nodes. Yes, or 5 element I want to push on the stack. I am implementing this using linked list. So मैं क्या करूंगी? ये लिखा है आपने, इसे इरेज कर दूं. Yes or no? Yes, ma'am. Remaining student, listen, there are 45 students, okay? I'm not saying about branch change student, but remaining student, only 4 to 5 students are answering and giving the response. So what I can understand, whether the remaining student either understood all the things, second thing, they understood nothing. So they have no doubts and no query. Is it okay? Is it correct? You all understood all the things? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I am removing this. See girls, अगर मैंने PPTs बनाई होती, I can take any PPTs from internet. Google सर्च करके बहुत सारी PPTs मिलती है डेटा स्ट्रक्चर पे. Whether it is a array, stack, linked list, कोई भी लो. There are so many PPTs available with diagrams. But अगर मैं आपको उसी तरीके से सिखाऊंगी, PPT दिखाई, कोड दिखाया, तो मेरा सिलेबस इजीली अब तक मेरा 5th यूनिट भी कंप्लीट हो चुका होता. बट दीज आर द कोर कंसेप्ट, और इनके क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाते ही है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टेक्निक. आई एम नॉट यूजिंग पीपीटीज. मेरे पास रेडीमेड कोड भी है. ये जो मैंने अभी लिखा है ना, आई हैव सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस कोड ओनली. इट इज वेरी इजी फॉर मी टू शो दैट सॉफ्ट कॉपी. मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगी और आपको सॉफ्ट कॉपी दिखाऊंगी. इज इट ओके? व्हाई आई एम राइटिंग दिस? बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट साइड बाय साइड. व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड यू राइट फॉर दैट, ये भी एक्सप्लेन कर रही हूं मैं. सो आपको इजीली समझ में आएगा और वो माइंड में फिट हो जाएगा. दैट इज माई एम. यस, now I want to reverse the string. So for reversing, what I will do, first of all, main function लिखा, int main. Suppose I have defined all these functions: initialization, push, pop, and checking whether stack is empty. All these functions I have defined before this main function.
and now I am in main function. So what instruction I will write? That is, first of all, creation of S node pointer top. Yes. Then char x for storing one by one character. Now first task, initialize the stack as top equals to null, means stack null है, so I will write init. और कैसे? I will pass the address. So stack initialize हो गया. Now we'll define or will display the message enter string. Yes. अब जो string user enter करेगा, suppose India, one by one character enter करेगा, so I will use the technique while x equal to get char not equals to /n. जब तक यूजर एंटर की प्रेस नहीं करता तब तक वन बाय वन कैरेक्टर कीबोर्ड थ्रू एक्सेप्ट होगा. इट विल बी अलोकेटेड टू वेरिएबल एक्स. फर्स्ट कैरेक्टर है आई. यस. सो क्या होगा? ऑपरेशन विल बी परफॉर्म ऑन दैट आई. क्या करना है? आई हैव टू पुश दैट आई ऑन स्टैक. सो व्हाट आई विल डू? पुश. आई विल कॉल द पुश फंक्शन push top comma x. So first node will get created with the value I and top will point here. Yes. Second, ये repeatedly चलता रहेगा. I, second है N, D, then again I and A. Now my top is here. In this way, stack will be created by calling the push function. Now I want to reverse करनी है string, so मैं one by one pop करूंगी और print करूंगी, तो मेरा reverse print हो जाएगा. So for that purpose क्या करना है? We are going to perform repetitively pop operation. So कब तक हम pop operation perform करेंगे? Initially top is here. ये डिलीट करो, टॉप यहाँ पे आएगा. डिलीट करो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. टॉप यहाँ पे आ गया. इसे डिलीट करो, टॉप क्या हो जाएगा? null. Yes. Either you can say while top is not equals to null or stack जब तक empty नहीं हो जाता. Stack empty है means क्या है? उसमें हम condition कौन सी चेक कर रहे हैं? We are checking if top is null means stack is empty. So directly you can write while top is not equals to null. तब तक pop करो. Else you can check while not empty stack, not empty top. Yes, जब तक stack empty नहीं हो जाता, not empty stack का पॉइंटर कौन सा है? Top. That's why ये वहां पर प्रोवाइड किया. Then what we are doing? X equals to pop and top. So first node will be popped. Data जो है उसका A वो X में आएगा. Here we call cout X. डिस्प्ले क्या होगा? पहले A. ये डिलीट हो गया. टॉप इज हियर. टॉप नल है? नो. पॉप दिस, रिटर्न दिस वैल्यू आई. एक्स में आ गई आई, वो प्रिंट करो आई. ये डिलीट हो गया तो अब टॉप ये है. अब इसे भी पॉप करो. ये पॉप करोगे तो ये डिलीट होगा और ये टॉप यहाँ पे आएगा. तो ये जब पॉप करोगे तो एक्स में डी आएगा. प्रिंट दैट एक्स. सो डी आ गया. नाउ दिस इज टॉप. पॉप इट. प्रिंट द वैल्यू एन. टॉप इज here. This will get deleted. Again, last node is this. उसे भी delete करो. Before deletion, copy the value into x variable and print it. Print कर दिया, इसे delete कर दिया. Now top is null. Come out of the loop. Got how to use
push, pop, empty, and initialization function in program practically. Got everybody? Reverse string print हो गई? Any doubt here? No doubt, ma'am. Ma'am, the whiteboard is not clear. It's very blur. Can you please click the photo of this program and send on the WhatsApp? Yes, I will take the photograph. I will send it on WhatsApp. Okay. So now we will stop here. Okay. Yes, expressions on the stack. Very very interesting है. बिल्कुल भी बोर नहीं होगा. यहाँ तक आपको कोड समझना था, बहुत कुछ करना था. नेक्स्ट जो है जस्ट लॉजिक अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एंड तक चलेगा. बट बीच बीच में उसके लिए भी प्रोग्राम देखने हैं आपको, बट लिटिल बिट इजी. ओके, सो विल स्टॉप हियर.